Hi, I think you got protein synthesis. After that one some interesting information regarding protein. There was one scientist, Dr. Hargovind Khurana. He is Indian scientist. He discovered triplet codon for various 20 amino acids. यानी उन्होंने सबसे पहले अलग अलग टाइप के 20 अमीनो एसिड्स हमारे बॉडी में पाए जाते हैं वो पूरे वर्ल्ड को बताया. And because of his such a special work contribution, for his special work he awarded Nobel Prize in 1968. As we know, protein genes plays very important role in a hereditary. Genes carries hereditary characteristics from parents to offspring. But suppose guys, if there any change in a nucleotide, then there is a what minor affection on a genes. This change of a position of nucleotide make a change, minor change in a genes, and this is called mutation. Now suppose sometimes majorly बहुत बार ये change बहुत minor होता है, but sometimes this change is considerable. That means it can be a focus, can be visible clearly, and which cause various genetic disorders. So mutation causes genetic disorders due to the improper position of nucleotides in a genes. After enter study of protein and protein synthesis, now we are going to see next topic, that is evolution. Now what is evolution? Guys, you may be heard that a first organism originated in a seawater. It was unicellular. But now you can see around us various types of multicellular, big, various complex life process organisms are there. So how it is formed? So this is a study of evolution. So what is exact definition of evolution? Evolution is a gradual change occurring in a living organism after a long duration. That means, see, gradual step by step changes are occurring in a living organism, and it is very slow process, so it takes very long time. This is called evolution. Now what kind of a more information is there in evolution? That is our study. Very interesting topic guys. Do you know guys how many years ago first organism originate? आपको मालूम है सबसे पहला लिविंग ऑर्गेनिज्म कब पैदा हुआ? Guess. 1 year, 10, 1000, 10,000? No. 3.5 billion years ago. That means nearly 350 crore years ago the first organism originate. Guys, ये लाइन को यदि आप ठीक से पढ़ेंगे ना, 350 crore years ago the first organism generate. It is very shocking and it is very interesting information. Now you better know the first organism originated in a seawater, ocean. So how the changes occurs within them? This is a study in evolution. After formation of earth in our solar system, there were some elements on earth. So various simple elements get combined and they form a various organic as well as inorganic compounds. देखो सिंपल एलिमेंट से ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स फॉर्म हो गए, और ये सब ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स कंबाइन, एंड ड्यू टू द वेरियस केमिकल चेंज विद इन देम इट फॉर्म्स प्रोटीन एज वेल एज वेरियस न्यूक्लिक एसिड.
अभी ये प्रोटीन एंड वेरियस न्यूक्लिक एसिड and other external factor along with the chemicals are going to form the first cell, that is prokaryotic primitive initial cell, which is actually not well developed. We already know it is a prokaryotic cell. After formation of prokaryotic cell, that is undeveloped cell, it takes very long duration to form well developed cell in a ocean, sea water, and this well developed cell is eukaryotic cell. This eukaryotic cell is again initially it is in a unicellular manner, that is single cell, but इसमें भी अलग अलग वापस चेंजेस चालू हो गए, and this change leads to form multicellular organisms. सो ये मल्टीसेलर ऑर्गेनिज्म जिसमें सेल वॉल प्रेजेंट था, सेल वॉल एब्सेंट था, उससे अलग अलग टाइप के ऑर्गेनिजम्स फॉर्म हो गए. इसमें से कुछ स्टडी हम लोग 9th में पढ़ चुके हैं. देयर वेर 5 किंगडम मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंगे, किंगडम प्लांटे, किंगडम एनिमेलिया. ऐसे बायोडाइवर्सिटी में 5 किंगडम्स हम लोग पढ़ चुके हैं. तो अभी ये जो डेवलपमेंट है कैसे होगी, देखो ना यूकैरियोटिक में अभी हम लोग हमारे आजू में करंटली हम लोग यदि हमारे आजू बाजू में देखेंगे तो हमें क्या दिखाई देगा, सिंगल सेल अमीबा और एंड पैरामेशियम जैसे ऑर्गेनिज्म भी है, एज वेल एज वेल बिग फिश वेल एंड एलिफेंट, जिराफ या फिर कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर ह्यूमन ऑर्गेनिजम्स आर ऑल्सो अराउंड अस. उसी तरीके से आप देखेंगे क्लोरेला जैसा एक सिंपल अलगे प्लांट कैटेगरीज देयर, उससे उसी के साथ साथ अ बिग जायंट ट्रीज, मैंगो, बैनियन ट्रीज आर ऑल्सो अराउंड अस. सो ये जो चेंजेस, ग्रेजुअल चेंजेस किस तरीके से बने हैं, दैट इज एक्चुअल इवोल्यूशन. इस इवोल्यूशन में हम लोग कुछ हमारे कंटेंट्स ऐड करने वाले. इवोल्यूशन various scientists had contributed their information. अभी आप सोचेंगे 350 करोड़ ईयर्स एगो किस तरीके का ऑर्गेनिज्म फॉर्म हुआ वगैरह वगैरह, या फिर बहुत साल पहले किस तरीके के एनिमल्स थे. तो इसके बारे में साइंटिस्ट लोगों को कैसे इंफॉर्मेशन अवेलेबल है. सो गाइस दे और वी हैव एविडेंसेस रिगार्डिंग दैट. And based on evidences we can say many more information regarding the changes occurs in organism, that is evolution. So ये हमें पढ़ाई करने का है. आपने किसी से सुना रहेगा कि हमारे जो ओरिजिनेट मंकीज थे, सो वी ओरिजिनेटेड फ्रॉम मंकी. आज के डेट में यदि हम लोग को किसी ने ये कहा तो हम लोग बिलीव नहीं करेंगे, यार मंकी किधर और हम किधर. But guys, it has some scientific background. It has some evidences, and based on these evidences, we have information about this evolution. So let us see which are that evidences. Guys, these are the 6 evidences of evolution. First one, morphological evidences. Second, anatomical evidences. Third, vestigial organs. Fourth, paleontological evidences. Fifth, connective links. And the last one, embryological evidences. We are going to study each of them details in our next lecture. Take care.